अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िलिप सिडनी की जो है द डिफेंस ऑफ पोएज़ी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे इसकी जो है थोड़ा सा बायोग्राफी इनकी देख लेते हैं। बायोग्राफी टच थोड़ा सा वो है ले लेते हैं। सर फ़िलिप सिडनी वाज एन इंग्लिश पोइट, स्कॉलर एंड सोल्जर हु इज़ रिमेंबर एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द एलिजाबेथन एज। He was born in 30 November 1554 and he was died in October 17, 1586. Sidney received an excellent education and was fluent in several languages including Latin and French and Italian. He attended the Shrewsbury School and later studies at Christ Church, Oxford, where he excelled in his study. He developed a deep interest in literature, poetry, and in classical philosophy. Sidney was a poet and writer. He wrote multiple poetry, sonnets, and prose work, including the most generous work, Catastrophe and Stella. Sidney's literary reputation was further enhanced by the prose work The Defense of Poesy, also known as Apology for Poetry, जिसे हमने आज स्टडी करना है. In this, he defended the value and importance of poetry, and he argued that it should be considered as a legitimate form of knowledge and a powerful means of moral and intellectual instruction. Apart from that, Sidney was also actively involved in the military. He participated in the Battle of Zutphen in 1586 as a volunteer in a Dutch revolt against Spanish control in the Netherlands. Sidney, he suffered a fatal injury during the conflict and passed away on October 17, 1586 at the age of 31. अब हम डिस्कस कर लेते हैं द डिफेंस ऑफ पोएज़ी को, जो कि फ़िलिप सिडनी ने जो है वो लिखी है. The Defense of Poesy is a work of literary criticism by Elizabethan poet Philip Sidney. It was written in 1580 and first published in 1595 after his death. 1580 में ये लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश इसकी डेथ के बाद हुई थी. The Defense of Poesy or an Apology for Poetry is a reply of Stephen Gosson पम्फलेट द स्कूल ऑफ अब्यूज़. ये लिखी क्यों गई थी? ये रिप्लाई था बेसिकली स्टीफन गोसन का पम्फलेट द स्कूल ऑफ अब्यूज़ में, क्योंकि उसने द स्कूल ऑफ अब्यूज़ में कहा था virtually अटैकिंग ऑन पोइट्स इंक्लूडिंग सिडनी एंड क्वेश्चनिंग द मोरालिटी ऑफ फॉल्स वर्क एंड पोइट्री. डिफेंस ऑफ पोइट्री अपोज गोसन ऑब्जेक्शन टुवर्ड पोइट्री. This was written not only to defend poetry from what Stephen Gosson says, but also to genuinely defend poetry to everyone. ये जस्ट इसीलिए नहीं लिखी गई थी कि जस्ट पोइट्री को डिफेंस किया जाए कि जो सिर्फ फिलिप सिडनी ने ही लिखी है, सिर्फ उसी पोइट्री को, लेकिन ये सारी पोइट्री जो लिखी गई थी अब तक उन सबको डिफेंड किया जा रहा है, ना कि गलत पोइट्री को, बल्कि सही पोइट्री को डिफेंड करने के लिए ये जो रिप्लाई है लिखा गया था. गोसन वाज अ पोइट, अ पर्सन हु फॉलोज स्ट्रिक्ट मोरल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल. ठीक है, गोसन जो था स्टीफन गोसन वो वाज अ पोइट एंड इन हिज स्कूल ऑफ अब्यूज ही क्लेमिंग दैट पोइट मिसलीड रीडर्स and separate immorality, wrongdoings. According to Sidney, poetry is an art of imitation, a superior communication tool, and its value depend on what is conveyed. He prefers imaginative literature and teaches better than history and philosophy. Literature has the power to reproduce an ideal golden word. Stephen Gosson makes claim on poetry which Sidney answered. His claims that Stephen ने जो इन पे है अटैक किए थे, 4 क्लेम किए थे. पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, पोइट्री इज़ अ मदर ऑफ लाइज, इट इज़ अ नर्स ऑफ अब्यूज़. Plato had rightly banished the poet from his ideal world. Against these claims, Sidney has answered them in the following ways. For Sidney, poetry is a source of knowledge and a civilizing force. Gosson attack on poetry, saying that it corrupts the pupil and it is the wastage of time. But Sidney believes that learning is best when it teaches virtue and happiness like poetry. In essay societies, poetry was the main source of education. He remembered ancient Greek society that represent poets. The poets are always looked up, so the poetry is not a waste of time. According to Philip Sidney, the poetry is the monarch of art, teaching virtue and imagining a perfect version of nature.
He responds to criticism of the art and it follows with argumentative style. आई होप कि आपको समझ आ रही होगी. मैं जस्ट यहाँ पे इसकी इंग्लिश कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो वर्डिंग थी उसकी आपको समझ नहीं आई थी. That's why I am reading this. Sidney begins with an introduction and shares the story about how horse riding. He focused the high value on the appreciation of poetry and its reflect like the teacher Pugliano. उसके बाद जी ये लास्ट पेज है. सिडनी डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय नथिंग दैट पोइट्री वाज द फर्स्ट ऑफ द आर्ट कमिंग बिफोर फिलोसफी एंड हिस्ट्री. Poetry used by classical historian philosophers such as Plato and Herodotus to create philosophical allegories and vivid historical details. Poetry was considered an important source of knowledge in the classical world as it conveyed important knowledge about the future. The work would not have gained fame if they had not borrowed from poetry. ये बता रहा है कि जो है पोइट्री को बहुत से लोगों ने बोरो किया था अपने नॉवेल्स में, अपने वर्क्स में. अगर वो पोइट्री को ना लिख के आते तो मे बी उनके वर्क जो थे वो इतने ज़्यादा फेमस ना होते जैसे कि होने चाहिए थे. Poetic means maker, and this title reflects the fact that poet like God create new and more perfect realities using the imagination. Sidney then moves to the preposition where offer a definition of poetry as an art of imitation that teaches its audience through delight or pleasure. Poetry is like a speaking picture. Poetry is a more effective teacher of virtue than history of philosophy due to the fact that philosophy which is limited to abstract ideas or history which is limited to what has actually happened, but poetry can represent perfect example of virtue in a way best suited for learning its reader. To the second claim, Sidney argues that poetry is not a source of abuse, at its never aims at truth, and it helps maintain morality and peace. He believes poetry aims to banish poetry abuse, not poets. In the poet's golden words, heroes are ideally presented and evil are corrupt. The effect of the poem depends on the poet's power to move and effective quality of the poetry. Epic poetry is the best form to showing heroic deeds. इसके बाद इसका कंक्लूजन आ जाता है. इन द वे सिडनी डिफाइंस ऑल द चार्जेस क्लेम अगेंस्ट पोइट्री एंड स्टैंड फॉर द सेक ऑफ यूनिवर्सल एंड टाइमलेस क्वालिटी ऑफ पोइट्री, मेकिंग अस टू नो why the poet are universal genius. सो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी. और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने सारा कुछ जो पढ़ा है वो पूरा एक क्वेश्चन है जो कि द डिफेंस ऑफ पोइजी का है. अगर आप लोग इसको रेडी करते हैं तो आपके जो है फुल मार्क्स आएंगे. आई होप अगर आप लोग एक चीज़ की इसको रेडी करते हैं. और इसका जो PDF है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू सून. अल्लाह हाफिज़.